Oh, hello my gorgeous angels. I hope you guys are doing extremely well. So आज मैं करने वाली हूँ very soft glam, pinky, girly sort of a look. If you're interested to learn that look, then continue watching. तो भाई सबसे पहले तो हम गहने पहनेंगे क्योंकि गहनों के बिना ये look incomplete होगा. Now let's get started. So I've already filled in my brows using my LA Girl brow pomade. Brows already मैंने fill in कर दी हैं. Now Maybelline Fit Me concealer लेते हुए I will prime my lids. इससे क्या होगा कि आपका eyeshadow, the colors will pop more and your eyeshadow will not crease at all. So I'll just spread this on the entire lid and एक brush लेते हुए इसको पूरे lids पे मैं spread कर दूंगी. आज मैं ये हुदा ब्यूटी न्यूड आई शैडो का प्रयोग करूंगी. इतनी अच्छी हिंदी आपने कभी सुनी है? बताइए मुझे. अप्लाई 1, 2, 3 colors in my crease, 3 matte shades and then I'll get back to shimmer. So सबसे lightest color मैं सबसे बड़े ब्रश पे उठा के काफ़ी ऊपर तक लेके जा रही हूँ. So this is my first transition color. दोनों आँखों पे एक सही मेकअप करूँगी कोशिश करके. Alright, so on one eye I have already applied my second transition color. जो दूसरा पिंक था वो मैं already apply कर चुकी हूँ. So आप देख सकते हैं काफ़ी definition आ चुका है इस आँख में. And I'll do the same thing on this eye. अपनी छोटी छोटी आँखों को हम खूब बड़ा कर देंगे, खूब बड़ा. From the epiglottis. All right, off camera again मैं blend करके I'll be back. अब सबसे महीन ब्रश का प्रयोग करते हुए सबसे डार्क पर्पल आई शैडो को मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ आउटर वी पे, एंड खूब अच्छे से ब्लेंड करूंगी. दूसरी आंख में भी यही करूंगी. आज मैं ऐसी हिंदी बोलूंगी कि आप लोग का दिल मचल जाएगा. हिंदी और उर्दू मिक्स करके, ठीक है? दिल मचला दूंगी मैं, ठीक है? ऑफ कैमरा अगेन मैं ब्लेंड करके आती हूँ. अब अपनी लंबी लंबी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए शिमर आई शैडो में उठाऊंगी एंड आईलिड्स पे ऐसे लगाऊंगी. 3/4 ऑफ माई लिड, 3/4 लिड्स पे लगाऊंगी मैं. आई होप ये मैंने 3/4 लिड पे मैं शिमर आई शैडो लगाऊंगी. आपकी मर्जी, जितनी चमक धमक आपको पसंद है उस हिसाब से आप इस शिमर को लेयर कर सकते हैं. कुछ अंग्रेजी शब्द निकल आते हैं. ऑलराइट, सो मैंने एक पतले से ब्रश पे एक ब्राउन आई शैडो लेके थोड़ा सा स्मज आउट कर दिया है. मेरा दिल बहुत मचल रहा था कि मैं कुछ ग्लिटर लगाऊं, कुछ पिगमेंट लगाऊं, लेकिन मैंने अपने दिल को दिलासा दिया कि हर वक्त ग्लिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कभी थोड़ी नॉर्मल लाइफ भी जी लिया करो. इसलिए आज मैंने ग्लिटर नहीं लगाया है. So it's my first time trying out magnetic lashes. These are by Lashable Lashes by Ritika. The packaging is gorgeous. It looks stunning. It comes with its own magnetic liner and magnetic lashes. So let's try it out for the first time together. So I'm going to grab this eyeliner and patla sa ek eyeliner मैं बनाऊंगी. I'll wait for it to dry and then I'll try sticking the lash in front of you guys. So I'm going to grab the lash now and oh wow, that was pretty easy. Literally in a second it got stuck. Oh wow, that's extremely easy. Very easy. I'll do the same on the other eye and I'll get back. Alright, I'm going to stick the other lash now. Literally took 3 seconds. Alright, so मुझ गरीब के पास कॉटन ख़त्म हो चुकी है, तो टिश्यू पेपर एंड Garnier micellar water से I'm gonna clean my face.
जो भी फेस पे आई शेडो गिरा है, आई एम जस्ट गोना वाइप दैट ऑफ एंड आई विल बी राइट बैक। अब मैं अपनी स्किन को थोड़ा हाइड्रेट करूंगी यूजिंग द लव अर्थ क्यूकम्बर मिंट फेस मिस्ट। Just a little bit. I will let my skin absorb that and then I'll be right back. Next step, मैं sunscreen इस्तेमाल कर रही हूँ। Daytime look है, I want to be protected, so I'm going to apply Love Earth's sunscreen and a good amount of it. This is also going to hydrate my skin really well. Now I'm going to use a primer by Sugar Cosmetics. It's going to smooth my pores. I have little bit of open pores right here, so I don't always apply a primer, but on certain days my pores are quite large, so उस वक्त मैं ज़रूर लगाती हूँ। आज मुझे अपने pores थोड़े से ज़्यादा enlarged लग रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा primer यहाँ लगाऊंगी। Now I'm gonna color correct my Chanel bags using a peach color corrector by LA Girl. ये मैं हल्का सा अपने under eyes पे लगाऊंगी and around the corner of my mouth. That's it. Using my beauty blender, I'll blend it out. I've blended the color correction out. अब मैं Sugar का foundation ले रही हूँ। मेरा shade है 07. I love this foundation. And I'm not going to over apply it. Just going to dot it on my entire face. अब किसी किसी के लिए ये ओवर होगा, किसी किसी के लिए बहुत कम होगा, सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू प्रेफर, व्हाट यू लाइक, आप उतना फाउंडेशन लगाएं। अब इसी फाउंडेशन के पीछे एक ब्रश आता है, सो 90% ऑफ द ब्लेंडिंग आई विल डू यूजिंग द सेम ब्रश एंड एट द एंड आई विल गो अहेड एंड ब्लेंड इट आउट फर्दर यूजिंग माय ब्यूटी ब्लेंडर। नाउ वंस अगेन मैं सेम Maybelline Fit Me concealer in the shade in the number 15 लेते हुए I'm going to highlight my chin, Cupid's bow, nose, forehead, under eyes. Now I'm going to custom create a blush for myself. In case you don't own a cream blush, you can also try this trick. Concealer थोड़ा सा लूँगी मैं at the back of my hand, or you can take a drop of your foundation, both would work, and any lipstick that you like. So I'm going to go for this peachy sort of a lip color and mix the concealer or your foundation with that lipstick, and you can custom create a cream blush for yourself. I'm going to apply it on both my cheeks and blend it out. So I'm going to blend the blush out using my beauty blender, and I'm also going to apply some on the top of my nose right here to get a very blushy, cute sort of a look. So now I'm setting my face with translucent powder, and I'm going to bake slightly on my smile lines as well as my under eye. So अपनी आँखों को और बड़ा दिखाने के लिए I've applied nude eyeliner inside my waterline और एक pink eyeshadow बस हल्का सा अंडर आई पे मैंने लगाया। That's it. Keeping the under eye pretty minimum. एक बड़ा सा ब्रश लेते हुए I'm going to dust off the bake. मैं बेक काफ़ी लंबे समय तक नहीं रखती हूँ, max 2 to 3 minutes. Now today I'm not going to highlight my skin. I want the base to be pretty matte but very blushy. So I've just applied some blush in a very Kashmiri sort of a manner all over the nose like this. I want a very cute blushy sort of a look. And I'm completely going to skip highlighter today. Now using my PAC Micro Fixer, I'm going to spray it on my face and let that sink in my face. Alright, so I've applied some mascara on the bottom lashes. Outline bhi maine lips kar liye hai. Now today I'm going to apply a pinky sort of a lipstick. I might mix a couple of shades from this lipstick palette. This is by Shoparel. It's pretty nice, very matte, very long wearing. So I'll custom create a lipstick for myself. So I've created this color for myself and I sort of like it.
अब जल्दी से ऑफ कैमरा आई कंप्लीट दिस. बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पर, इससे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाए आई कंप्लीट माई मेकअप एंड आई बी बैक. दिस बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पर, इससे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाए आई कंप्लीट माई मेकअप एंड आई बी बैक.